Okay, sir. सिंपल रिएक्शन, ज्यादा कुछ नहीं है. सेकेंड इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. सो दीज आर द टू रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स जो आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा. तो हाफ पेज के लगभग छोड़ दीजिए एंड देन यू राइट द टॉपिक एमओपी ऑफ एल्काइन. और अदर पहले ये लिख दीजिए एल्काइन. सो व्हाट इज एल्काइन? हाइड्रोकार्बन. तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n-2. ठीक है. हाइड्रोकार्बन with at least one triple bond. With at least one triple bond. इसके बाद लिखिएगा MOP, method of preparation. The first method of preparation is from calcium carbide. Please write from calcium carbide. So पहले calcium carbide कैसे बनता है? You start with calcium carbonate. When you heat calcium carbonate, it gives a decomposition reaction in which we get calcium oxide and carbon dioxide. Next, when you react calcium oxide with carbon, it forms calcium carbide, calcium and C2, CaC2. It gives you carbon monoxide. Okay, so this is calcium carbide. Yes, sir. Now, when calcium carbide is hydrolyzed, that means reacted with water, CaC2 plus H2O, it gives you C2H2 plus calcium hydroxide. ठीक है. That is why calcium carbide का आपको ऐसा डब्बा नहीं मिलेगा. जैसे ये, if you see, if you go to the chemistry lab, there you will see sulfuric acid, hydrochloric acid, benzene, all of these, they will have certain boxes, right? Certain containers. But calcium carbide does not have any container because it can react even with moisture. पानी, इसको हवा में पानी होता है, and it will decompose to ethyne. Right? This is what ethyne. Yes, sir. ठीक है. So you can see that this particular method of preparation, calcium carbide one, it can only give you one alkyne, that is ethyne. Only used for, please write, only used for preparation of ethyne. मैम खदीजा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. आप लोग सेकंड से स्टार्ट कीजिएगा, फ्रॉम वेसिनल डाइहाइड्रेट. ठीक है. थोड़ा रिकॉर्डिंग में आप लोगों को चेक करना पड़ेगा. इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस प्लीज. These are the two reactions that you have to do from the text book. ठीक है. एल्कीन का टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा. हाफ पेज इसके लिए छोड़ दीजिए एंड हाफ पेज इन पोर्शन के लिए. लीव वन पेज एंड देन यू विल राइट द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. Take a screenshot, leave one page, and then you'll write second method of preparation from vicinal dihalide. I hope you guys have taken a screenshot. Please write the topic. आके आपने लिख लिया? Yes, sir. यहाँ से लिखिएगा, है ना? All of you guys please write from vicinal dihalide. So vicinal dihalide, we know that when you have CH2, single bond CH2, and then you have two halogen atom like this. First, you will react this with alcoholic KOH. When you react with alcoholic KOH, you get CH2, double bond with CH, and there is one halogen atom remaining. Now, after this, if you add even a stronger base, that is sodium amide, NaNH2, then in that case, you get CH, triple bond CH. ठीक है.
So the two groups that we are having here, that is CH2 and CH2, that should be present. और यहाँ पे आपके पास क्या है, halogen and halogen are present, right? So for example, if you have something like this, 1 2, and here you have Br. Let's suppose you have something like this. You have four carbon atoms. You have four carbon atoms. One Br is here, and the other Br is here. When you react this with alcoholic, first step में alcoholic KOH, second step में NaNH2, then you will get 1 2 3 4 carbon atoms. Sorry, आप इसको कैसे लिखिएगा? CH3 as it is bonded to carbon, triply bonded to the other carbon, and then you have CH3. ठीक है? Yes, sir. Write this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Khadija. So these are the only two methods of preparation for alkynes. Okay. After this, you will write the topic. Please write this with me. Chemical properties. Chemical properties में number 1 is acidic character. Okay, this is also very important. So for example, you have H, C triple bond C and then H. When you react this with sodium, this one of the hydrogen is taken away and you get H, C triple bond C with a negative charge and sodium positive, and it gives you hydrogen gas. So metal में अगर आप acid डालिएगा तभी आपको hydrogen gas मिलता है, right? Similarly, if you add even one more sodium atom, then this would give you carbon with a triple bond carbon. Both of these will have negative charge and it will be stabilized by Na positive here and Na positive here. Right? So this reaction, it shows the acidic nature of alkyne. They can ask you a question, write a reaction which shows the acidic nature of alkyne. So this is the reaction with sodium. Now you can also have reaction with sodium amide. Let's suppose you have CH3 carbon with triple bond carbon. तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन. सो व्हेन यू रिएक्ट दिस विद सोडियम अमाइड, दैट मींस NaNH2, in that case you will get CH3 singly bonded to carbon, triply bonded to carbon atom and the negative charge, you will have sodium positive. So this is, both of these reactions are evidence that alkynes are acidic in nature, right? Acidic character, and उसके बाद लिखिएगा line. Alkynes are acidic in nature due to the hydrogen attached to sp hybridized carbon atom. Sp hybridized carbon atom, which is more electronegative, EN is electronegative, and can easily
bear a negative charge. ठीक है. Now, if you don't remember why it is more electronegative, it is because of high percentage S character. ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ाया था. sp carbon is more electronegative due to high percentage S character. Write this down, raise your hand once you. अच्छा, ये रिएक्शन आप लोगों ने लिख लिया होगा होपफुली. साथ साथ एक PowerPoint लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग नोटिस कर लीजिए. So if I talk about acidic strength of different hydrocarbon, acidic strength, if I compare alkane, alkene, and alkyne, because all of these are hydrocarbon, they have hydrogen, but alkyne is the most acidic, then alkene, and then alkane. Because alkene will have only sp3 hybridized carbon atom, which has only 25% of S character. Alkene has sp2. In this, we have 33.33% of S character. And alkyne, it has sp hybridized, which is having 50% of S character. Okay. So alkyne is the most acidic. Now, if I want to compare alkyne में आपके पास तीन cases के alkyne मिलेगा. First of all, you have both the carbon atoms having hydrogen. This will be most acidic, followed by one carbon atom having alkyl group. This can be CH3 or any other carbon atom also. जब एक hydrogen होगा, this will be less acidic. And when both the carbons are not having hydrogen, that will be the least acidic. This alkyne will be very less acidic, है ना, बहुत ही कम होगा इसका. Write this down, raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done. Just waiting for Amna. Amna, just waiting for you now. Raise your hand once you're done. ठीक. Next reaction जो है आपके पास, that is addition reaction.
एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें, so alkynes they have two pi bonds, right? So you write as alkynes have two pi bonds. They show addition reaction and can add two molecules of hydrogen, halogen, hydrogen, halogen, hydrogen halide, ठीक है, you can add hydrogen halide and you can also add water, और addition of water is going to be very important, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड क्या हो जाएगा, HX, ये सारे के सारे बहुत सिंपल होंगे, there's no, you're not going to have any problem in them, and water, ठीक है। इन तीनों का हम लोग को क्या देखना, वी हैव टू सी दी एडिशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री। सबसे पहले लिखिएगा ए पार्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन को ऐड हमने बहुत बार किया है, राइट। सो यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट आर द रिएजेंट, यू विल हैव H2 in the presence of nickel, palladium और platinum, right? So अभी हम platinum लेके चल रहे हैं। So when hydrogen is added, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन में, एक हाइड्रोजन उस कार्बन में, so you'll get CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। When you have one more mole of H2 in the presence of a platinum, then one hydrogen will go to the other one carbon, so ये हो जाएगा CH3, single bond CH3। So you can go from alkene to alkyne, alkyne to alkene using two hydrogens, ठीक है। Similarly, you can have CH3, CH, presence of H2, the presence of palladium, CH2, then you can have H2 in the presence of palladium, you get CH3, CH2 and CH3, ठीक है। तो बेसिकली एल्काइन में अगर आपने 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाले तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बी लिखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में भी वही सेम चीज होगी, यू विल हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2। पहले तो क्या मिलेगा आपको, CH डबल बॉन्ड CH एंड बोथ ऑफ दीज विल हैव Br and Br। If you react with one more Br2, then you will get CH single bond CH, दोनों एटम्स पे पहले से Br लगा हुआ था, और वन मोर मोल ऑफ Br will be added, that's it, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह Br2 की जगह यू कैन हैव अनदर, यू कैन हैव क्लोरीन आल्सो, यू कैन हैव आयोडीन आल्सो, है ना। एंड एज यू हैव सीन दैट, इससे पहले भी हम लोगों ने व्हेन वी एडेड हैलोजन इन एल्कीन, देन आल्सो वी सॉ दैट Br2 का क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन, यस सर। है ना। एंड इट डीकलराइजेस, तो यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं, एल्काइन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो एल्काइन के भी टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज ब्रोमीन वाटर फॉर दैट।
Write the C part. Addition of hydrogen halide. इसमें लिख लीजिए जरा, this forms gem dihalide. What is gem dihalide? डाइहैलाइड क्या होता है? टू हाइड्रोजन एटम्स, डाइहैलाइड सॉरी, डाइहैलाइड या फिर जेम डाइहैलाइड क्या होगा? टू हाइड्रोजन एटम्स, टू हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू सेम कार्बन. अच्छा बाय द वे, अगर आपको ना ये स्टार्टिंग में दिया ना, तो आप सीधा इसको लिखिएगा, ठीक है? यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, फाइन. वो सीधा ही आपके Yes, पास, यू विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट, ओके? वो बीच का हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह से दो बार रिएक्शन होता है, बट ऐसा नहीं कि Br2 में आपको क्या फिर आगे नहीं बताया कि रिएक्शन हो रहा है, सो यू विल नॉट राइट लास्ट, बट यू विल एंड द रिएक्शन कंप्लीटली, है ना? लास्ट वाला पूरा लिखिएगा. Now addition of hydrogen halide में, see here you have H C triple bond CH, you react this with HBr, then you will get CH2 doubly bonded with CH, and this will have one Br. ठीक है? One more molecule of HBr can react here, और यहाँ पे इसको मिल जाएगा CH3 singly bonded with CH, and it will have two Br atoms, right? Br and Br. Now, if you have unsymmetrical alkyne, for example, you have something like this CH3 triply bonded, sorry, singly bonded with carbon, then it is triply bonded with CH, और अगर हम यहाँ पे HBr डालें, then you will get CH3 carbon atom. This middle carbon will have both the Brs, higher degree वाला ना. This is 2 डिग्री कार्बन, this is 1 डिग्री कार्बन. तो 2 डिग्री वाले कार्बन पे आपको क्या मिल जाएगा? दोनों Br और फिर इधर पे CH3. ठीक है? राइट दिस डाउन. रेज योर हैंड वंस यू आर डन. आराम से इसको लिख लीजिए. उसके बाद if you have not written the previous parts also, ना, please let me know. आराम से बिल्कुल इसको लिख लीजिए. Then raise your hand once you are done. उसके बाद you will understand the addition of water, है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. yes, sir. Raise your hand once you are done.
Please raise your hand once you are done. Just waiting for Amna now. ओके, अब ध्यान से देखिएगा, नो नीड टू राइट नाउ, है ना? डी पार्ट इज addition of water. Now, first of all, we will start with a unsymmetrical alkene, है ना? Propine से हम start करते हैं. We have CH3, singly bonded to carbon, which is further triply bonded with CH. When you add water to it, please understand water is HOH. ठीक है? HOH. Now, this is done in the presence of HgSO4 and H2SO4. Acidic condition में है, and Hg is having +2 oxidation state. Now, this carbon atom, it is going to be attacked by the oxygen lone pair, और एक bond बनेगा इस तरह से. Pi bond will break and you will have CH3 bonded with carbon atom, which is having OH, and this carbon atom is also having a double bond with CH2. ठीक है, इसको OH मिल गया, देखिए इस तरह से हुआ है. This carbon atom got the oxygen and hydrogen OH group, और इसको हाइड्रोजन मिल गया. So you have CH2 and OH. Now this form in which a carbon atom is having a double bond and that the same carbon atom is having OH group. ये देखिए डबल बॉन्ड की वजह से En और OH की वजह से OL. So it is known as enol. Now if you look at this hydrogen atom that we have here, this hydrogen atom, it is bonded with oxygen, which is electronegative, and that is why it will have a delta positive charge. And very near to the hydrogen, which is having a delta positive charge, we have pi electrons. Now, since pi are electron rich side, pi electrons are what? Electron rich side. This pi electrons will attack on the hydrogen atom. This is the first step. And as hydrogen is getting the electron density, it will lose the electron and it will give the electron density to the carbon oxygen bond. Now, if I look at the bonds, so this CH3 is as it is, bonded with carbon. One of the pi bond is breaking. Sorry, one of the pi bond is breaking, and you are getting this carbon atom is getting a hydrogen. So it will become CH3, and the CO bond is getting a double bond. As you can see, what we have formed acetone. Acetone, or rather, this is what it is, a ketone. Na? Ketone इसका खास नाम होता है. Common name is इसका acetone. ठीक है, this is actually propane 2-1, but it is acetone in common name. Now, this conversion of enol to acetone, it is known as tautomerism. This is known as tautomerism. अब एक जरा थोड़ा सा आप लोग टॉटोमेरिज्म याद है? टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ाया था, इनॉल फॉर्म एंड कीटो फॉर्म. यस सर. ठीक है, तो वही चीज हो रही है. डबल बॉन्ड किस पे जा रहा है? हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है. द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. Addition of water. So in this case, we have taken what? Propine, and we have got what? We have got acetone. Let us suppose we are taking ethyne. Ethyne means we have H, C triple bond, CH plus H2O. अब यहाँ पे बिकॉज बोथ दी कार्बन एटम्स आर सेम, क्या होगा आपके पास? वाटर जब ऐड करेंगे हम, सो यू कैन ऐड हाइड्रोजन इन वन एंड OH इन अदर. आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो जो दो डिग्री है वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा. सो दिस हाइड्रोजन will attach to carbon, this OH will attach to this carbon atom. Now in the presence of Hg2 positive and acid है तो H plus लिख सकते हैं आप. Now this hydrogen is as it is bonded with carbon atom, इसको हम CH2 लिख सकते हैं ना. It got 2 hydrogens and this is carbon atom doubly bonded with carbon. This carbon, it is having OH group इस तरह से, and there is one hydrogen here. Now what is going to happen? This hydrogen is what? It is delta positive, so it will be attacked by the pi bond, and this hydrogen will leave the electron density to the CO, leading to the formation of this carbon atom will get one more hydrogen, making it CH3 single bond, carbon with a double bond O and a hydrogen. So this is the CHO group. That means it is what? It is ethanol.
2 carbon atoms of aldehyde, it is ethanol. So you can go from alkyne to aldehyde or ketone. ठीक है, चलिए प्लीज कॉपी दीज टू, raise your hand once you're done. Raise your hand once you are done. Waiting for Akib and Khadija. Waiting for Khadija now. Next reaction is polymerization. This is the last. देखिए आपके पास है रिएक्शन पॉलीमराइजेशन. अब पॉलीमराइजेशन होते हैं दो किस्म के. एक को बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन and the other one is known as cyclic polymerization. Linear और एक होता है साइक्लिक. वैसे डिफरेंस लिखने के लिए नहीं आएगा, बस वो एक छोटे से स्पेस में हो जाए, इस वजह से आई एम पुटिंग इट इन साइड बाय साइड. ठीक है, डिफरेंस लिखने के लिए आप लोगों को नहीं आएगा. राइट. हाँ, लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, यू टेक इथाइन CH ट्रिपली बॉन्डेड विद CH, यू टेक n मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, और इसमें आपको मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड विद CH और इसके जैसे n मॉलिक्यूल्स. क्या मतलब इसका, सो इफ यू टेक n नंबर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल्स ना, तो आपके पास इस तरह से, आई मीन दिस चेन इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पार्ट. यू हैव CH डबली बॉन्डेड विद CH, ठीक, फिर सिंगल बॉन्ड विद CH, फिर डबल बॉन्ड विद CH, फिर सिंगल बॉन्ड विद CH, फिर डबल बॉन्ड विद CH, एंड सो ऑन. दिस पर्टिकुलर चेन इज गोइंग टू गो ऑन. तो रिपीटिंग यूनिट क्या है यहाँ? What is the repeating unit here? You can see the repeating unit is what? It is CH double bond CH. Once again, यहाँ पे भी CH double bond CH है, यहाँ पे भी CH double bond CH है. So this is the repeating unit. आपसे repeating unit आपने देख लिया और आपसे पूछे कि इसका मोनोमर क्या होगा. So this is polymer. ठीक है, this is a polymer. मोनोमर क्या होगा इसका? मोनोमर. मोनोमर को लिखने के लिए रिपीटिंग यूनिट प्लस अ पाई बॉन्ड.
तो रिपीटिंग यूनिट में आप एक पाई बॉन्ड ऐड कर दें, ठीक है। तो व्हाट इज रिपीटिंग यूनिट? सी एच डबल बॉन्ड सी एच, इसमें आप एक पाई बॉन्ड ऐड कर दें। दिस इज द मोनोमर ऑफ द लीनियर पॉलीमर, जिसमें भी रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या करना है ये सोनो पीसल में गाइस? यस सर। ठीक है। नाउ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इट इज। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये लिख लीजिए, यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, इसमें आप लोग कोई रिएजेंट दिया ही हुआ नहीं है, पर इट इज सम स्पेशल कंडीशंस में इसको किया जाता है। हाई प्रेशर में जनरली पॉलिमराइजेशन होता है, ठीक है। देयर इज नो रिएजेंट गिवन, तो आप लोग को लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इन साइक्लिक पॉलिमराइजेशन यू विल टेक इथाइन, दैट इज सी एच ट्रिपली बॉन्डेड विद सी एच, ठीक है। एंड यू विल रिएक्ट दिस विद रेड हॉट Fe ट्यूब, आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, और आपको सिंपली बेंजीन मिल जाएगा। गॉट इट गाइस? प्लीज टेल मी। यस सर। Write this down, raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Khadija. अब here we have two more topics of alkane and alkene, ठीक है। एक है कॉन्फॉर्मर्स और कॉन्फॉर्मेशंस, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो सबसे पहले आप लोग डालिए हेडिंग कॉन्फॉर्मेशंस, कॉन्फॉर्मेशंस इन, ऐसे लिख लीजिए, इन एल्कीन। क्या है कॉन्फॉर्मेशंस इन एल्कीन, क्या होता है? If you remember the chemical bonding chapter, in that I told you guys that the carbon carbon single bond, जब भी सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड बनता है, then rotation is allowed in the sigma bond, है ना। अगर this molecule, this carbon atom here, it is rotating, है ना, ये कार्बन आटम अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? एक सेकंड, अब आई हैव अ टूल फॉर दिस, बट एक सेकंड, लेट मी सी इफ आई कैन use something better to show you guys the rotation.
कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। कैन यू सी दैट हाउ इट इज रोटेटिंग? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए जरा, अगर रोटेट करने में, ये देखिए, हमने इसको, दोनों कार्बन एटम्स को ऐसे फेस टू फेस कर दिया ना, इस तरह से अगर हम देखें, सो यू कैन सी दैट समटाइम्स इट इज अलाइनिंग विद द हाइड्रोजन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, नाउ द हाइड्रोजन्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, एक कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन, दे आर कंप्लीटली अवे फ्रॉम ईच अदर। कैन यू सी दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी। दिख रहा है हाँ या ना, बताइए। नहीं, Yes, sir. हाइड्रोजन, माय बैड गाइस, आप लोगों को हाइड्रोजन क्या है वो नहीं पता होगा ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल बता देते हैं आपको हाइड्रोजन क्या है इसमें। माय बैड, माय बैड। सी, ये जो व्हाइट व्हाइट वाले हैं ना, दीज आर हाइड्रोजन्स। ठीक है, और बेसिकली ये ग्रीन वाला क्लोरीन और ये ब्लू वाला ब्रोमीन होता है। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब बस ये देखिए, हाइड्रोजन्स को देखिए, दे आर कंप्लीटली अवे फ्रॉम ईच अदर। करेक्ट है? करेक्ट है, यस और नो? Yes, sir. अब देख, नेक्स्ट फ्रेम, देखिए, थोड़ा सा रोटेट हुआ, थोड़ा रोटेट हुआ, और रोटेट हुआ, और रोटेट हुआ, और रोटेट हुआ, और रोटेट हुआ। अब यू कैन सी द हाइड्रोजन्स आर फेसिंग ईच अदर। अब दोनों हाइड्रोजन क्या है, अब नजदीक आ गया ना हाइड्रोजन्स। कैन यू सी दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, बात समझ sir. में आ रही है? अब देखिए, अगर हम इस तरह से और करते जाए, सो यू कैन सी दैट व्हेन यू आर रोटेटिंग इट ना, तो अलग अलग आपको स्पेशियल अरेंजमेंट मिल रहा है, राइट? इन दिस केस अगर आप देखें तो this particular configuration, it will be very very highly repulsive, because ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने है, ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? अभी तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज बॉल्स्टिक मॉडल। द एक्चुअल एटम अगर होगा ना, तो एक्चुअल एटम कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। कैन यू सी दैट नाउ हाउ द हाइड्रोजन्स आर वेरी नियर टू ईच अदर? दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे यही जो अलग अलग रोटेशन करने से जो अलग अलग आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस आ रहे हैं, दिस इज नोन एज कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉन्फॉर्मर्स। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड कि ये किस वजह से हो रहा है और क्या होता है, नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, सिंस रोटेशन along sigma bond is allowed, since rotation along the sigma bond is, it is allowed, ठीक है, this results in, this results in different spatial arrangement, different spatial arrangements of what, of atoms in space। ठीक है, now you write next point, such spatial arrangements, such spatial arrangements, uh, such spatial arrangement of atoms which can be changed, कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय द रोटेशन अराउंड, which can be changed by the rotation along cc bond, c sigma है ना, c single bond c, are called conformers,
are called conformers, and these are also known as rotamers or conformations. Right? Therefore, alkanes have infinite conformers, है ना? मतलब 0.001 डिग्री भी अगर मूव कर रहा है तो भी वहां पे दिस इज वन कॉन्फॉर्मर, फिर 0.001 डिग्री वो भी एक कॉन्फॉर्मर, ठीक है? बट वी विल बी स्टडीइंग सम स्पेसिफिक कॉन्फॉर्मर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, है ना, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है उनको पढ़ा जाएगा. आमना एंड खदीजा, रेज योर हैंड वंस यू डन. इसके बाद आप लोग एक टॉपिक लिख लीजिएगा, दैट इज कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन. वेटिंग फॉर आमना एंड खदीजा. आमना एंड खदीजा, वेटिंग फॉर यू गाइज. Just waiting for Khadija now. Khadija, raise your hand once you're done. Khadija, are you there? Khadija, let me know if you have not done. ठीक है. Now, please see in conformers of ethane. अब ethane तो हम CH3 दिखाते हैं, right? So obviously, from this particular view, we cannot understand the conformations or the conformers of ethane. We have to have some different kind of projection or different kind of way of representation of ethane molecule, or any molecule for which we need to see the conformers. So there are two main projections that we have to study. पहले का नाम है Sawhorse projection. Now in Sawhorse projection, how do we show it? आप एक ऐसा सीधा लाइन बनाइए, मतलब सीधा, मतलब सीधा लाइन ही है, स्लैंट है ना, डोंट बी कंफ्यूज्ड. एंड द टू हाइड्रोजन्स आर लाइक दिस, ठीक है? और एक सेकंड, ऐसे मत लिखिए हाइड्रोजन को, एक सेकंड थोड़ा सा और, है ना, स्लैंट लाइन. टू हाइड्रोजन्स आर लाइक दिस, वन हाइड्रोजन इज हियर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. और बिल्कुल ही ऐसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है? उस दूसरे वाले कार्बन एटम पे, राइट? नाउ दिस हाइड्रोजन इज एग्जैक्टली बिहाइंड, ये जो आपके पास ये हाइड्रोजन है,
This is exactly behind the front hydrogen. ठीक, exactly behind it. So this hydrogen will be eclipsing the backward one. इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं eclipse configuration. Eclipse configuration, and because eclipse configuration में hydrogen are very near to each other, ये दोनों नजदीक है काफी, that is why it is higher in energy. Less stable. अब दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अलग एक्सट्रीम क्या होगा, when these two are very far away. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे. So the hydrogens, now you can see the hydrogens are what? The hydrogens are completely far away from each other. ठीक है, these are pointing downwards, these are pointing upwards. This is pointing down, this is pointing up. So इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं staggered configuration. This is known as staggered configuration. स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में इट इज व्हाट, इट इज, अच्छा एक्लिप्स यहाँ पे एक और लिख लीजिए को, मोर रिपल्शन. रिपल्शन किस वजह से होगा, बिकॉज ऑफ दीज टू हाइड्रोजन आर वेरी नियर, है ना, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर. Here there is less repulsion and it is lower in energy. And it is more stable. In between eclipse and staggered, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोलते हैं स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन, इन बिटवीन. अब स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीजें आ सकती है, राइट. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. इस कॉन्फ़िगरेशन को देख लीजिए आप. सो दी हाइड्रोजन आर लाइक दिस. ठीक है, it is neither eclipse nor it is skew. ठीक है, so it is neither eclipse nor it is staggered. So skew configuration is in between eclipse and staggered. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है, please write this down. This is conformers of ethane. तो दो याद रखना आपको, eclipse and staggered. Eclipse is having more repulsion, that's why it is higher in energy and it is less stable. Staggered configuration is having less repulsion, it is lower in energy and that's why more stable. We have to see one more. अभी इसी चीज को एक और प्रोजेक्शन से देखा जा सकता है, दैट इज नोन एज द न्यूमैन प्रोजेक्शन. रेज योर हैंड वंस यू डन.
Waiting for Amna. Amna, raise your hand once you are done. Fine. देखिए तो अगर आप देखें सॉहर्स प्रोजेक्शन, सो इट इज वेरी क्वाइट सिमिलर टू द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे कार्बन एटम को, एक कार्बन को आगे और एक कार्बन को पीछे, इन अ स्लैंट लाइन वी शो इट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन को। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हाउ डू वी शो द टू कार्बन एटम्स? सो द फर्स्ट कार्बन एटम इट इज शोन बाय अ डॉट, एंड द सेकंड कार्बन एटम इट इज शोन बाय अ सर्कल बिहाइंड इट। इसके पीछे ही ये सर्कल जो है ना, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट द कार्बन विच इज बिहाइंड दिस। डॉट से पहला कार्बन आपने रिप्रेजेंट किया है, और सर्कल से पीछे वाला कार्बन। नाउ इफ आई वांट टू पुट द हाइड्रोजन हियर, तो हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से रखा जा सकता है। सो दीज आर द थ्री हाइड्रोजन ऑफ द डॉट कार्बन। ये जो आगे डॉट कार्बन है उसका थ्री थ्री हाइड्रोजन है, दीज आर द थ्री हाइड्रोजन हियर। नाउ हियर वी हैव वन हाइड्रोजन, हियर वी हैव अनदर, हियर वी हैव अनदर हाइड्रोजन। अभी जो पीछे कार्बन है ना, इसको हम ना एक अलग रंग से लिख देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ी आसानी। सो इसके जो हाइड्रोजन है विच आर लाइक दिस, जस्ट बिहाइंड दिस हाइड्रोजन ऐसे, just behind this hydrogen like this, and just behind this hydrogen like this. So obviously you can see that it is what? It is eclipse configuration. Eclipse. Right? Now when we want to have the staggered, so for staggered configuration what we need to do, आप इस इन तीनों हाइड्रोजन कैसे हटा दीजिए यहाँ से। Just below this you will have one hydrogen, right? Just opposite to this you will have another hydrogen, and just opposite to this you will have another hydrogen. Fine. Now this is what, this is the staggered configuration. ठीक है, तो the other properties are same है ना, बाकी बीच में इसके skew होगा, that's another thing, but eclipse यहाँ पे भी it is the same thing, but representation बस दोनों का different है। they are representing the same thing using two different projections, right? Newman projection and the Sohars projection। तो Sohars देख लिया हमने, this is the Newman projection, please write this down। Amna and Akib waiting for you guys। आपसे पूछा जाए eclipse और staggered, आप लोग फिगर बना दीजिएगा, है ना? एनर्जी इज मोर स्टेबल, सो ऑब्वियसली staggered इज मोर स्टेबल। अब इसके बाद लिखिए आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ऐसे लिख दीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, ठीक है, इसको प्यार से जीआई बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जीआई। नाउ जीआई आर ऑफ टू टाइप्स, जीआई आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ जीआई? एक को बोलते हैं सिस, सिस फॉर्म,
and the other one is known as transform. ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रांस वाला फॉर्म ना. हाउ टू आइडेंटिफाई द सिस फॉर्म? प्लीज राइट. टू आइडेंटिकल ग्रुप्स और एटम are on the same side of double bond. I'm not saying same carbon atom. सेम कार्बन एटम में टू आइडेंटिकल ग्रुप्स की बात नहीं करें, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें. ठीक है, तो साइड और कार्बन में क्या फर्क है प्लीज सी. अगर सेम कार्बन में होता है यानी कि इसी कार्बन में दो सेम ग्रुप है, हम वो नहीं कह रहे. बट आई एम सेइंग इज दैट अगर ये आपके पास डबल बॉन्ड है तो इधर एक्स है तो इधर भी एक्स होगा, इधर वाई है तो इधर भी वाई होगा. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट डज इट मीन बाय साइड? बात समझ में आ यस रही है? सर. सेम कार्बन एटम में अगर आपके पास इफ यू हैव आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम तब तो वहां पे जीआई होता ही नहीं है. ठीक है, सेम साइड में तो उसका सिस फॉर्म हो गया. एंड इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्म, देन हियर वी विल राइट टू आइडेंटिकल ग्रुप्स or atoms are on the opposite side of double bond. फिर से साइड की बात करें, सेम कार्बन पे तो होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, यानी कि कार्बन डबली बॉन्डेड टू कार्बन, यहां पे अगर एक्स है तो दूसरा एक्स अपोजिट साइड में होना चाहिए, यहां पे अगर वाई है तो दूसरा वाई अपोजिट साइड में होना चाहिए. तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म. राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. इसके बाद एक नोट लिख लीजिएगा. इफ टू आइडेंटिकल या टू सेम ग्रुप्स or atoms are on a carbon atom with double bond, then it won't show cis trans isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या हो गया? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. राइट, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं. वेटिंग फॉर आमना एंड खदीजा.
Waiting for Amna and Khadija. Just waiting for Amna now. Amna, just waiting for you now. Amna, raise your hand if you're done. Akib, you can lower your hand. Akib, you can lower your hand. हाँ, Yes, sir. ठीक है, ये सवाल देखिए. Which of the following compounds will show cis trans isomerism? तो देखिए क्या कंडीशन है. टू सेम ग्रुप्स अगर होंगे तो वो नहीं शो करेगा. ठीक है. सो इस कार्बन एटम में क्या ग्रुप्स है बताइए जरा. व्हाट ग्रुप्स आर अटैच्ड हियर. कौन से दो ग्रुप्स हैं इस कार्बन एटम में. CH3. सेम है ना. Yes, कार्बन sir. एटम इट इज हैविंग सेम, तो ये शो नहीं करेगा. दिस वोंट शो. व्हाट अबाउट दिस वन, सेकंड वन. Sir, इस H2 कार्बन में and Br. नहीं नहीं, एक कार्बन को देखो, एक कार्बन देखो, इसमें क्या दो सेम है H. या दो अलग अलग है. दो सेम है. सेम है ना, तो ये भी नहीं शो करेगा. व्हाट अबाउट दिस कार्बन एटम, इज इट हैविंग टू सेम ग्रुप अटैच टू इटसेल्फ. एक तो C6H5 है और दूसरा क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन. मेक H. सेंस. ठीक है. Yes, और व्हाट sir. अबाउट दिस वन, ये कार्बन एटम पे H. एक एक हाइड्रोजन है और दूसरा. CH3. सो सेम ग्रुप्स आर नॉट अटैच्ड ऑन अ कार्बन एटम ना, सेम ग्रुप्स नहीं है. एक कार्बन पे अगर हम देखें तो दोनों ग्रुप्स अलग अलग है. दैट मींस इट इज गोइंग टू शो दी सिस ट्रांस आइसोमर्स. व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर कार्बन, इसमें कौन कौन से ग्रुप है. CH3 and H. हाँ. एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इसमें कौन कौन से, ये तो अलग अलग है ना दोनों. यहाँ Yes, पे sir. कौन कौन से है. Cl and CH3. ये भी सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा. आप जब हमने कह दिया सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा तो इसको बना के भी देखते हैं. पहला और फर्स्ट और सेकंड तो नहीं करेगा. लेट अस अबाउट टॉक अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ वन. ठीक है. तो थर्ड वाले में पहले आप कुछ भी बना लीजिए. ठीक है. पहले वाले में कुछ भी बना लीजिए. कार्बन, इधर C6H5, इधर लिया आपने हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, जो मर्जी क्या रखें इधर बताइए जरा. और शुड आई कीप हियर, यहाँ पे क्या रखें बोलिए. H. एच रख दें. चलिए एच रख दिया हमने. और यहाँ पे क्या बचेगा, CH3. बताइए टू सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड या अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड ऐसे है ना. Opposites. अपोजिट साइड, तो क्या हो गया, ट्रांस या सिस. देखिए बताइए. Trans. ट्रांस. अब इसका सिस फॉर्म क्या हो जाएगा, वंस यू हैव मेड, अब कुछ भी बना लीजिए, सिस बन जाए, ट्रांस बन जाए, उसका दूसरा तो तुरंत बन जाएगा. कार्बन, इसको ऐसे रख दीजिए C6H5. इधर हाइड्रोजन ऐसे रख दीजिए, डबली बॉन्डेड विद कार्बन. इधर पहले आपने हाइड्रोजन रख दिया, इधर CH3 रख दिया. सो टू ऑफ द ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड. नाउ दिस इज सिस. Yes, sir. चलिए इसका फोर्थ वाला बना के वो जरा आंसर भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे. Okay, sir. सिस एंड ट्रांस.
ज्यादा टाइम मत लगाइए। गाइस यू टेकिंग टू मच टाइम। बस एक सवाल करना है, पहले बाद में लिख लीजिएगा बाकी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस फोर्थ वन। बना के भेजिए, है ना। डोंट वरी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, गलती होगी, पहली बार बना रहे हो तो ऑब्वियसली गलती होना चाहिए। जितना आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप बना के भेजिए। देयर इज सम चैट। नो आंकिब, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर आंसर। अच्छा जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ, आई गॉट माय बैड। मेरा ओके सर। नेट सी क्यों लिखा है आपने? सीएल है ना? कहाँ पे सर? ये ओके सीएल सर। है यस सर। है ना? सीएल है। ठीक है, देखिए गाइस, यू कैन पुट CH3 हियर, और फिर CH3 यहाँ पे पुट कर दीजिए। And here you have hydrogen remaining, here you have Cl remaining. So this is CH3 and CH3, same sign. So cis form, CH3, CH3, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, so this will be the transform. एक और लिख लीजिए, cis trans of butane, cis and trans form of butane. ब्यूटेन तो दो कार्बन बना दिया आपने। नाउ दिस कार्बन विल हैव CH3, इधर भी CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। एंड यहाँ पे जब CH3, एंड इफ यू हैव CH3 हियर, hydrogen and hydrogen, so this is the cis form, this is the trans form. नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्क है cis और ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्यूटेन लिख दिया हमने, माय बैड गाइस, ब्यूट टू इन लिख लीजिए जरा, माय बैड, 1 2 है ना, ब्यूट टू इन। Now, if I look at the polarity of the bonds, this carbon is sp2 hybridized, so it is more electronegative, so it will be pulling electron like this. और यहाँ पे एक डाइपोल बनेगा इस तरह से, और यहाँ पे एक डाइपोल बनेगा इस तरह से। So you can see that both of these dipoles are coming downwards. तो एक net dipole रहेगा आपका downwards. That means this cis form is what? It is polar in nature. If I look at the trans form, तो यहाँ पे carbon to CH3, one is coming downwards और दूसरा बिल्कुल same direction में upward की तरफ dipole. So these two dipole are going to cancel each other. That means mu net, the net dipole will be equal to 0. That's why it is non-polar. It is non-polar.
Now, what is the consequence of this? The consequence is that the boiling point of the cis isomer, it is greater than that of trans isomer. Okay, since cis but 2-ene is polar, its boiling point is greater than trans but 2-ene. ठीक है, इतना लिखिए। और आज के लिए इतना ही। You will have one more class on this particular topic of hydrocarbon aromaticity and the reactions of benzene. ठीक है, बस यही एक टॉपिक बचा हुआ है। Then we are going to look at thermodynamics. Yes, sir. Write this down. Raise your hand once you're done. Amna and Khadija waiting for you guys. This is trans, इसको ठीक से लिख लीजिएगा, trans 2-ene. Waiting for Amna and